Hello. Please ask your doubts except question number 11. Question number 11 we will do later. That is on 24th October. Question number 11 लेंदी है, वो बाद में करेंगे. That will take time. Seema, am I audible now? Question in portfolio. Please ask question. What's the question in portfolio? Which question in portfolio, Seema? Question number 29 in portfolio and 11. Question number 11 in hedging chapter. Hedging. Some of the questions we will do later on. Any doubt related to hedging? Questions of hedging we had done so far? Question number 28. 28 in portfolio. Let me see the question. Question number 28. Where is the problem in question number 28? Question says find out the return, expected return on portfolio from portfolio D and portfolio G. Portfolio D, here the hint is given elimination of unsystematic risk. That is complete. Complete elimination of risk can be done in the case of Markovitch model, and partial elimination can be done in CAPM model. So the expected return for portfolio D will be computed with the help of Markovitch expected return formula. And for portfolio G, it will be computed with the help of CAPM. So portfolio D, that is complete elimination. The portfolio is efficient. Capital market line. The graphical representation will be capital market line, and expected return RF plus lambda, that is market price of risk, standard deviation. And this one will be computed with the help of capital CAPM. And RF is given, lambda has been computed. Lambda is RM minus RF divided by standard deviation. Lambda has been computed here, market price of risk, that is RM minus RF divided by standard deviation of market. First we have to find this one, then compute the value of expected return. And for this one, RF is given only for the first one. Yes. Okay. Question 29, I know question 29 has been left out. Question 29, question 29 in portfolio, question 11 in this one, hedging. Today we will do option. I will try to cover all the options and option strategy. That is option valuation model. If it will be finished, then next class we will do swap. Then 13 and not audible. Hello, am I audible clearly? Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you.
So for option today we will try to do option, then some of the rest out portion of futures. Next class we will do swap, and then 13 on 20th of October we will do forex. After that on 24 we will do FRA and question number 11 and left out questions of this chapter. Because I will complete the syllabus till 10th October, 10th, sorry, November. Let's wait for 2 minutes. It's 4:09. Hello. Anand, capital budgeting we will do on 27th. Part D, we are doing part D. From 27th, we will start chapter 1. Now let us start with option. It's 412. Options, that is one of the derivative option. It is traded both over the market and exchange in exchange market. There are two parties under option contract also. Option buyer, one is known as option buyer and option seller. Some of the parts in futures have been left out that we will do at the end. अभी माइंड आपका फ्रेश है, अभी स्टार्ट ही हुआ है सेशन, तो पहले हम लोग जो डिफिकल्ट है वो कर लेते हैं. So basic concepts of option. Option, there are two parties. Again, option buyer. Buyer is also known as holder of option. Buyer is also known as holder. And another party is option seller. So there are two parties, buyer and seller. Buyer is known as holder. Seller is known as writer also. Buyer or holder of option. Till this point it is clear. Option, there are two parties. Option buyer, option seller. Buyer is also known as holder. Seller is also known as writer. Now buyer or holder of option can do two things in the contract. Buyer or holder of option can do two things. One is contract to buy. He can buy the asset also or he can sell the asset also. If you are buyer of option contract, you can make the contract for two things. To buy the asset, to sell the asset. Option contract में दो party
होती हैं, वन इज बायर, अनदर इज सेलर। बायर के पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। बायर बाय भी कर सकता है एसेट को, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर सेल करने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नाम ही बायर है पर वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का भी कर सकता है। So contract to buy. When the buyer is making contract to buy, this type of option is call option. And when the buyer makes the contract to sell the asset, that is put option. आप इसको ऐसे याद रख सकते, कॉल ऑप्शन मतलब आप खरीद रहे हैं, पुट ऑप्शन आप अपने असेट रख रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं। So buyer or holder of option can make the contract to buy the asset, that is known as call option. The buyer can also make the contract to sell the asset, that is put option. So meaning of call option, put option, again voice, am I audible to others? मैम Yes, ma'am. आवाज चली जाती है। अच्छा, okay. If I'm not audible, then please let me know. So this one is buyer or holder can make the contract to buy. If the buyer is making the contract to buy asset, अगर आप किसी कंपनी के शेयर को परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, देन यू आर एंटरिंग इन कॉल ऑप्शन। अगर आपके पास शेयर है, आप बायर हैं, शेयर है आपके पास, आप इसे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, दैट इज पुट ऑप्शन। तो बायर बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है नाम से। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ एडवांटेज टू ऑप्शन बायर। कॉल ऑप्शन में हमने पढ़ा, कॉल ऑप्शन, under call option the buyer can buy the asset. Now what is the features of this call option? Contract made by buyer buy the asset at the maturity period. जो भी maturity period होगा, like future also, here the contract has some maturity period and the buyer has to buy the asset at the maturity period. Now buyer can also deny to buy the asset at maturity. अगर मैंने आपके साथ, आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया शेयर खरीदने का आज से 3 महीने के एंड पे, तो लास्ट टाइम में मैं आपसे वो शेयर बाय नहीं भी कर सकती हूँ। दैट इज द राइट ऑप्शन बायर हैज। बायर हैज द राइट टू बाय। अब इसमें सेलर को तो लॉस हो जाएगा, सेलर जो दूसरी पार्टी है, अगर आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और मैच्योरिटी पीरियड के एंड में मुझे लग रहा है कि मार्केट से मुझे सस्ता मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, आपसे नहीं खरीदूंगी, तो सेलर को लॉस होगा। उस केस में सेलर क्या करेगा, अब सेलर नया कस्टमर खोजेगा, नया बायर खोजेगा। इन दैट बायर पेज प्रीमियम अमाउंट दैट इज नोन एज ऑप्शन प्रीमियम टू सेलर। Buyer pays option premium to seller because buyer has right to buy. Buyer can also deny to buy at the end of maturity period, and if he denies option premium तो उसके पास, seller के पास हमेशा रहेगा, चाहे आप deny करते हैं या फिर। Now seller is obliged to act according to the buyer action. If the buyer is buying the asset, seller has to sell. Seller cannot deny. Seller cannot deny. Buyer can deny, but seller cannot deny. Again, we will repeat these two slides. Buyer can make the contract to buy the asset, that is known as call option. Buyer can make the contract to sell the asset, that is put option. Now buyer can deny also or buy also. Now seller is obliged. Seller does not have any right. Seller is obliged. Seller को अब खरीदेगा अगर buyer तो बेचना ही होगा. That is seller cannot deny. For this, buyer pays option premium to seller. In short, we can say we have read about three things: call option, put option, option premium. Option premium is what? Amount paid by buyer to seller, and right to buy, that is right to buy the asset
enjoyed by buyer. This right to buy, buyer has right to buy. आवाज क्लियर है? अब वॉइस क्लियर है या ब्रेक हो रही है? यहाँ तक कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है? Let us summarize this one. Call option. Option buyer has right to buy. Option seller obliged to sell if buyer buys. Option seller is obliged to sell. Voice break. Rest of the people, please let me know if the voice is breaking. Okay. Now option buyer call option. Option buyer has right to buy. Option seller is obliged to sell. Option premium is what? Amount paid by buyer to seller. Now next one, strike price or exercise price. Strike price means price at which contract is made to buy. That is known as strike price. जैसे आप फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में हमने पढ़ा था फ्यूचर प्राइस, हियर इट इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस. So for that these terms we will repeat. Option buyer, buyer or holder. Option buyer can make the contract to buy, that is call option. If buyer is making the contract to sell, that is put option. Now option buyer has right to buy. Buyer can deny also. Option seller is obliged to sell. Option seller does not have any right. Option premium, that is amount paid by buyer to the seller at the time of contract, that is known as option premium. Now strike price or exercise price is price at which this contract is made, means at which price you can buy the asset at the end of maturity period, that is strike price, same as future price. We will do one question regarding this. Question number 20. Question, please open question number 20. Question number 20, to understand the basic concept of call option. Question एक मिनट, question 20. Yes, this is the question. 421. 420. This is the question. Question 20. Sundar has entered into 5 put option and 5 call option. That contract is for call option and put option. Information is given here for call option. First we will do for call option. Security, there are 5 assets, P, Q, R, S and T. Exercise price is 370. Actual market price is 376. First we will discuss about call option. That is, call option means right to buy. The question says Sundaram has entered into 5 put option and 5 call option. Along with exercise price and actual price is given. Now what should he do? He is option buyer. Call option and put option buyer. So what would he do
with this information. Now for call option we will do first. For security P, let us take this one. Exercise price, that is strike price is 370. That person has made the contract to buy the shares of P at 370. इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है 370 रुपए 370 में इस शेयर को खरीदने का. Now at the end of contract period, that actual market price is 376. मार्केट में वो कितने में बिक रहा है 376 में, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने में खरीदने का किया है 370. 376 का असेट आपको 370 में मिल रहा है, आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, आपको कम प्राइस पे मिल रहा है. So this one will be AMP, that is actual market price is higher. Then EP here is strike price, that is exercise price. This situation is known as in the money. Yogesh, is the voice audible? Please check. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Now try to understand this question. Call option. Option basic concept is somewhat different. So please let me know if any point is not clear. फॉर कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, पर्सन हैज राइट टू बाय. आप बाय के टर्म्स में सोचना है, आपको खरीदने के टर्म्स में सोचना है कि खरीदने का डिसीजन आपको लेना है या नहीं लेना है. दिस इज द क्वेश्चन. सो फॉर द सिक्योरिटी पी, एक्सरसाइज प्राइस 370 में कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है खरीदने का. दैट इज एक्सरसाइज प्राइस मीन्स प्राइस एट विच कॉन्ट्रैक्ट टू बाय हैज बीन मेड, दैट इज एट 370. एट दैट टाइम मार्केट प्राइस इज 376. मार्केट में वो 376 का है. अगर आप ओपन मार्केट से खरीदेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो सस्ता मिल रहा है. दैट्स व्हाई वी विल बाय दिस असेट, दैट इज एक्शन विल बी टू एक्सरसाइज. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सरसाइज्ड. योगेश, आप एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें, मे बी आपके एंड पे प्रॉब्लम हो. एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज. Exercise price here is 370 and 376 actual market price, that will be exercised. Next one, next example, 450. If contract price is 450, contract price is 450 and it is available in the market at 444. आपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 450 में खरीदने का बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, बट मार्केट में वो 444 का ही अवेलेबल है. तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप क्यों खरीदेंगे? दैट इज दिस वन इज अवेलेबल एट 450, बट यू कैन बाय the same asset at 444 only from the open market. So that is known as out of money situation. The contract will be lapsed. Action taken will be lapsed. आप नहीं खरीदेंगे. Because option, under option the buyer has right, so buyer will take decision according to the market price. This is the scenario in option. So call option right to buy. If actual market price is higher, then that situation will be in the money situation and contract will be exercised. If actual market price is lower, आप मार्केट से खरीद लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं खरीदना है, दैट इज आउट ऑफ मनी. These two cases are for out of money. Next one, through the exercise price is 953 and in this one actual market price is also 953. Means both are same. This is known as at the money situation. In this case, we can hold the asset. We can think of taking decision later on. That is break even point. No action will be taken at this time. आप वेट कर सकते हैं कि इसे बाद में प्राइस फ्लक्चुएशन देखेंगे. So call option, 3 points we have to understand: in money, out money and at the money. In money, that is when AMP is higher, it is known. इसको याद करने से अच्छा आप इसे समझ लेंगे कि AMP मार्केट में वो महंगा मिल रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाय कर ले. And in money, out money when AMP is lower, that is out money situation, and at the money when both are equal.
So this is about the call option basic concept, what is in money, out money and at the money situation, and what buyer should take, action should the buyer take. Now same thing for the Ma'am, why the terminology in the money and out the money is used? What's the in the logic? money means that is profitable. It is available from the open market in 376, but through the option contract we can buy at 370. 6 rupees profit we can earn from this call option contract. That we will discuss later on also, that what is the intrinsic value and what is net payoff. Here in the money means that is profitable. Out of money means that is not profitable. If the contract is not profitable, we will lapse the contract. The option buyer will lapse the contract. In here in the money, it means the same asset is available in the open market at 376, but through the contract we can buy only at 370. That is the meaning of the in money situation. अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई हाउस है वो आपको 376 करोड़ का उसका मार्केट प्राइस है, लेकिन वो 370 करोड़ में ही आपको मिल रहा है, तो आप खरीद लेंगे क्योंकि 6 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर. तो दैट इज द इन द मनी सिचुएशन. क्लियर? मनी एक्सप्लेन कीजिए मैडम. सॉरी, फिर से एक्सप्लेन करो. एट द मनी. At the money means both are equal. In that case, we can hold the asset and hold the contract, and we can think later on according to the price fluctuation. At the money का मतलब अभी तो प्राइस इक्वल है, आप आगे उसका प्राइस कम होगा, मार्केट में कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे. अभी वो एट द मनी है, नो एक्शन इस केस में आप अभी छोड़ सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो गया ना मैडम. ये अभी पढ़ेंगे उसको हम आगे. ये यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट है या अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है. अभी हमने पढ़ा नहीं है उस चीज को कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे ऑप्शन में अमेरिकन, हाँ हाँ बिल्कुल, कि वो मैच्योरिटी पीरियड की बात कर रहा है या उसके पहले की बात कर रहा है. ठीक है, तो ये एट द मनी मीन्स अभी हम इसे होल्ड करेंगे, नो एक्शन. दैट हियर वी कैन से ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, आगे करते हैं इसे. Now for the put option, same thing for put option. Same case for put option. Put option here, put option we have read, buyer has right to sell. नाम ही buyer है, वो asset अपना sell कर रहा है. So we have of sell. Now put option 118. It means the person can sell the security A at 118. आप इस प्राइस पे सेल कर सकते हैं एसेट को, बट मार्केट में वो कितने का है? 122 रुपए में बिकेगा. It can be the same asset can be sold in the open market at 122. So you'd like to sell it from the open market. Why to sell in this contract? Because by selling the asset through this contract, the buyer has loss. Actual market price here is higher. This is just the opposite case of this one. यहाँ पे AMP high था, in money situation था. इस केस में अगर आप सेल कर रहे हैं, opposite situation है. If AMP is higher, that is out of money situation. Contract will be lapsed. And how this one will be? ये कैसे होगा? AMP actual market price, the same asset can be sold through open market at 122, but it can be sold through contract at 118. तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेचेंगे तो आपको लॉस है, आप ओपन मार्केट के थ्रू सेल करेंगे. दैट इज पुट ऑप्शन. दिस इज द केस ऑफ पुट ऑप्शन, राइट टू सेल. आपको सेल करना है या नहीं, दैट डिसीजन वी हैव टू टेक. So it will be the opposite situation of right to buy, that is call option. Here AMP is higher, that is actual market price is higher. The contract can be, the asset can be sold through open market at actual market price. That is out of money situation. The contract will be lapsed. Third point C, the contract exercise price is 350 and it can be sold, the same asset can be sold through open market price at 340. So it is better to sell through the contract. It can be sold at higher price through the
option contract. So this one will be exercise. It is in money situation, 10 रुपए का आपको यहाँ पे profit है. Now put option and call option. Any doubt regarding this one? Question number 20. Is there any point which is not clear when we have to lapse the contract, when we have to exercise? ये सिर्फ आपको सोचना है वहाँ पे कि हमें क्या करना है. आप इसे ऐसे सोचेंगे कि पुट ऑप्शन है तो वहाँ देखेंगे कि एक्सरसाइज प्राइस है, इसका मतलब इस प्राइस पे सेल किया जा सकता है एसेट, बट मार्केट में वो 122 में सेल होगा, तो मार्केट में हायर प्राइस पे सेल होगा, हम इसे मार्केट में ही सेल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेल नहीं करेंगे. So this is the question number 20 about the exercise of call option and put option. Now next, this is the summary written here, exercising call option. When AMP is higher than EP contract price, in money situation, it will be exercised. Now put option also we have done through the same question. Question number 20. Put option buyer has right to sell. Now option seller will what the option seller will do? Option seller is authorized to buy. Buyer has right to sell. Here in this case, put option. Buyer has right to sell. Now seller will have to buy the asset. Seller को खरीदना पड़ेगा. सिर्फ नाम ही कंफ्यूजिंग है, बायर एंड सेलर. आप एक्शन उसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे. बायर पुट ऑप्शन में अपना असेट सेल करता है. So same question number 20. This is the summary for what we have done in question 2 for put option. Now next one, intrinsic value of option. What is the meaning of intrinsic value of option? That is the difference between CMP and EP. In question 20, that is difference between 118 and 122 is known as intrinsic value. इससे आपको profit इतना ही earn हो सकता है. That is the intrinsic value. For this we will do one question. Madam. Yes, please say. Please say. Intrinsic value, difference between CMP and EP. Intrinsic value, how we have to find for call option, that is CMP minus EP. Current market price minus exercise price or 0, whichever is higher. Let us see with the question itself. Question number 22. Question number 22. Question 22, exercise price, that is premium. Same put option, call option, situation is given, exercise price is given, premium is given. Am I audible to others? Yes, ma'am. Okay. First, we will discuss about call option. Computation of intrinsic value. The situation here is exercise price is 125. Current market price is 112. मार्केट में आप 112 रुपए में बाय कर सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 125 में बाय करेंगे आप, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाय क्यों करना है? यस प्लीज से. मैम एएमपी एंड सीएमपी इज सेम है दोनों. AMP, हाँ हाँ, करंट मार्केट प्राइस और एक्चुअल मार्केट प्राइस. इन सम क्वेश्चन इट माइट बी रिटन एज AMP. So current market price 112 here it is and exercise price is 125. Means market से 112 में खरीदा जा सकता है and it can be bought through call option at 125. So buyer will not buy through the call option, there will be loss. So how to find intrinsic value? Here it is loss, it will be 0. The option contract will not be exercised in this case. So intrinsic value is 0. Now how to find intrinsic value? CMP minus EP. जब आपका मार्केट प्राइस CMP ज्यादा होगा तभी कॉल ऑप्शन आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू, difference between CMP and EP, that is CMP minus EP or 0. It means if it is negative we have to take 0.
नेगेटिव नहीं लेना है, माइनस में आता है तो जीरो लेंगे। CMP is 112 minus 125. Answer will be in negative, so it will be taken as 0. Intrinsic value will be 0 here. Same scenario for 122 also, it will be 0. यहाँ तक आपका 0 आएगा. In this case for F, exercise price is 109. आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 109 में बाय कर सकते हैं, बट मार्केट में वो 112 में अवेलेबल है. The same asset is available in the open market at 112 and it can be bought through option contract at 109. The intrinsic value here will be 112 minus 109, that is 3 rupees will be the intrinsic value. That difference will be the difference between CMP and EP is known as intrinsic value, and if it is negative then we have to take 0, because if it is negative contract will be not exercised in this case. जब कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट की बात कहाँ से होगी, इसलिए हम यहाँ पर 0 लेते हैं. And if it is positive then we have to write down the value, that is intrinsic value. Now for put option, that will be opposite. Put option, it will be EP minus CMP, that is exercise price minus CMP. Now let us see. Put option, we have to think about the selling the asset. Exercise price through the contract, it can be sold at 98, but it can be sold in open market at 112. 112 में आप ओपन मार्केट से बेचेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेल नहीं करेंगे. इट इज दैट इज EP minus CMP is negative. Here we have to take negative value as 0. That is intrinsic value will be higher of EP minus CMP for put option or 0, whichever is higher. And next one for E, EP is 116 and current market price is 112. That is 116 minus 1124 will be the intrinsic value. So intrinsic value computed, formula for intrinsic value for call option, it will be CMP minus EP. Negative term we don't have to take, that will be 0. And for put option it will be EP minus CMP. Now next one is time value. That is again maximum of option premium minus intrinsic value. This is the difference between option premium and intrinsic value. Option premium is what? Amount paid by buyer to seller at the time of making the contract. That is option premium. So time value is computed by difference between option premium and intrinsic value. In this question, option premium for put option rupees 10. 10 is the option premium. इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए जो बायर ने सेलर को 10 रुपए प्रीमियम दिया है. So this option premium is 10 and intrinsic value here is 0. That is 10 minus 0, 10. अगर नेगेटिव आता है तो आप 0 लेंगे यहाँ पे भी. Next one, option premium is 11. 11 minus 0, 11. In the same way we will find the option time value of this contract put option. Time value will be same for both the contract, call option and put option. For this one also time value will be premium minus intrinsic value or 0. Premium is, suppose in this case premium is 9, intrinsic value is 0, it will be 9. 10 minus 0, 10. In the same way we will find the time value. So far we have done, that is in money. Question number, from question number 20 we had seen in money, out money, in money situation, out money situation, at money situation for call and put. in money situation आपका कॉल ऑप्शन के लिए कब होगा? जब CMP और AMP हाई होगा. Now intrinsic value for call option, that is CMP minus EP. Intrinsic value for call option CMP minus EP. Intrinsic value for put option EP minus CMP. Time value will be option premium minus intrinsic value. So far we have read about these terms: intrinsic value, time value, at the money, in money. These things we have done. Madam, Yes, please say.
Madam, page 423. Page 423. Yes, in this question. Situation H. Situation. H. Last. Situation H. H. Situation H. Yeah. Exercise price put option. We have to sell here. Exercise price is 128. It can be Okay. sold through the option contract at 128, but in the open market it is selling at 112. So Okay. it can be sold from the this contract itself. That Okay. intrinsic value will be 16. Difference between 128 and 112. Now for Okay. time value option premium minus intrinsic value. Option premium is 13. 13 minus 16, that is minus 3. So minus we don't have to take. If it is in minus, we have to take 0. Okay. That is Right. maximum of premium minus intrinsic value or 0. In same as here we had taken. If answer is negative, then take the value as 0. Okay. Right. Okay. Now these terms, we have done these terms. Next one is net payoff. Net payoff means what is the net profit. That is for call option and put option. For buyer, intrinsic value minus option premium. Question number 24. From the question number 24, we will discuss this one. Question number 23. Practice this question at home. This is about the computation of intrinsic value and action. What action will be taken? So please practice this question at home. And now 24. That is what is the meaning of net payoff for call option. Call option holder means call option buyer. Holder is buyer. So this is for call option buyer. In this case, we have to find net payoff. Net payoff means first we will find the intrinsic value. Intrinsic value spot price is, that is current market price is 90. This is call option. Means we have to buy. It is available through the market at 90 and through the contract we can buy at 120. कॉन्ट्रैक्ट से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से आप इसे 120 में खरीद सकते हैं बट इट कैन बी परचेज्ड एट लोअर प्राइस फ्रॉम द मार्केट सो वी विल नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाय नहीं करेंगे ये महंगा मिल रहा है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट द एक्शन विल बी लैप्स पहले आप इसे बेसिक प्रैक्टिस करेंगे कि लैप्स होगा एक्सरसाइज होगा देन कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर it will be lapsed. So intrinsic value will be what? CMP minus EP. Here SP is spot price, that is CMP. 90 minus 120. Minus mein answer is in minus. It will be intrinsic value will be 0. Now intrinsic value we have computed. Next one option premium is 15. इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको फायदा हो रहा है कुछ भी नहीं जीरो है लैप्स कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट बट पैसा प्रीमियम तो ये आपको देना ही देना है आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करें या फिर लैप्स करें प्रीमियम विल बी पेएबल बाय बायर टू सेलर प्रीमियम तो आपको देना ये आपका लॉस हो गया बायर के लिए ये लॉस है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्सरसाइज सो intrinsic value is 0 net payoff will be computed as intrinsic value minus option premium प्रॉफिट आपका कुछ नहीं है 0 है एंड 15 रुपए अलग से लगे हैं आपको ऑप्शन प्रीमियम के सो दैट नेट पे ऑफ इज माइनस 15 15 रुपया बायर का लॉस है और ये लॉस जो आपका होगा वो राइटर के लिए जो दूसरी पार्टी है उसके लिए प्रॉफिट होगा उसको 15 रुपए का गेन है अगेन 90 rupees that is market exercise price is 120 means the contract can be bought the asset can be bought at 120 but market it is available in the market at 90 the buyer will not exercise this contract but option premium will be payable by the buyer to seller so this 15 0 minus 15 that net payoff is intrinsic value minus option premium this is minus 15 loss for the call holder call option buyer
And for this one, call option seller. For another party, it is profit. Which question? Time value. टाइम वैल्यू में अगर नेगेटिव आता है तो वो आपको जीरो लेना है. यहाँ पर नेट पे ऑफ में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो आपको लेना है वैल्यू. टाइम वैल्यू में जैसे फॉर द एच इट इज नेगेटिव था, ये मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू. और हम नेट पे ऑफ में क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस ऑप्शन प्रीमियम. Time value, that is difference between premium minus intrinsic value. If it is negative, then we have to take 0. But in the case of net payoff, आपको net payoff में intrinsic value पहले निकालना है, फिर option intrinsic value में से option premium को लेस करेंगे. और टाइम वैल्यू में हमने क्या किया था, टाइम वैल्यू में हमने प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू को लेस किया था और नेगेटिव था तो जीरो लिया था. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा. This is the difference. Net payoff में if it is negative, we have to show the negative value. But in the case of time value, negative term will not be shown. It will be taken as 0. ये आपका टाइम वैल्यू में नेगेटिव है, जैसे ये नेगेटिव आया था तो हमने 0 लिया था. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, बट नेट पे ऑफ इज इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस ऑप्शन प्रीमियम. वैल्यू का यूज कहाँ है मैडम? व्हाट इज द यूज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस टाइम वैल्यू? ये टाइम वैल्यू आपको इसमें बेसिक डिफरेंस बताता है कि ये जो ऑप्शन प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, इतने तक का आपका गेन हो सकता है. जो बेसिक हमें इसमें जरूरत होती है वो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूटेशन और इसका नेट पे ऑफ ये निकालना होता है. और वन क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन लैप्स, वेदर दिस इज इन मनी आउट मनी लैप्स, ये 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन में रहता है. कभी अभी पूछा था कुछ 1 साल पहले, प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ जून का शायद क्वेश्चन था ये. मैंने इसमें लिख रखा है आपको जो होमवर्क दिया है इसमें, दैट इज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन जून 2018 क्वेश्चन नंबर 8B, that is for 4 marks. This question is based on find whether the contract will be lapsed or exercised. That is based on question number 20. Question 20 के बेस पे है ये क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप करेंगे. तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है. बट नेक्स्ट वन इज, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन नंबर 20, 22, 24? 24 क्वेश्चन आप ये पूरा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे इसका. पहले आप क्वेश्चन करके आएंगे 24, फिर हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे. इज देयर एनी डाउट प्रिया? कुछ डाउट है किसी को? कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. Okay, then I think should I start to next topic? Yes, ma'am. Till 10th November I will try to cover the syllabus. 10th नवंबर तक मैं आपको सिलेबस करा दूंगी. इसलिए करा दूंगी क्योंकि उसके बाद क्लासेस होंगी आपकी, पर जो डाउट है वो एंड थ्योरी वो करवा दूंगी. 1 month बिफोर आई वांट टू कंप्लीट द सिलेबस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम फॉर 1 month. 1 महीने का फिर आपको मैं रिवीजन बता दूंगी कैसे करने हैं रिवीजन फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. So before till 10th November, I will try to cover all the practical questions of this subject. After that, we will have doubt classes and all the theories and revision of these, whatever you require. Now, next topic is computation of option theory. Also, yes, theory also I will do. Till 10th November, I will cover the practical questions, all the practical questions of part A, part B, and part D. These things I will do. 1 महीने में आप उसको प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. So after this one, we will read about the computation of option
pricing model, that is computation of option premium. Option premium is what? Option premium क्या है? That is buyer amount paid by buyer to seller. Buyer seller को जो पैसा देता है at the time of entering the contract is known as option premium. इसमें एक पॉइंट रह गया, टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड. American option contract, another is European. American contract means contract can be exercised any time before the maturity period. जैसे 3 मंथ, आज से 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है. If I am option buyer and the maturity period is 3 months, it means I can buy the asset. If it is call option, I can buy the asset any time before the maturity period. जब भी मुझे लग रहा है मार्केट प्राइस ज्यादा तो मैं सेल करती हूँ, मैं खरीद सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रेक हो रही है बहुत. अगर इसका मतलब कब American option contract can be exercised before the maturity period. A for American, A for वॉइस ब्रेक हो रही है. voice. Hope voice break ना हो. American option contract, that is contract can be exercised any time before the maturity period. Now European option means this contract can be exercised only on maturity period. मेच्योरिटी पीरियड के एंड में ही आप उसे अवेल कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं. जो मेच्योरिटी डेट है उसी डेट पे एक्सरसाइज करना है, दैट इज यूरोपियन ऑप्शन. अमेरिकन ऑप्शन कैन बी, this contract can be exercised anytime. So American option and European option, that European option means at maturity period. अब वॉइस ठीक है? जो मैंने एट द मनी के पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो ओपन रहेगा, मतलब एक्सरसाइज बाद में कर सकते हैं. हाँ, तो इसमें तो पहले यूरोपियन और कॉन्ट्रैक्ट, ना वो जो यूरोपियन में क्वेश्चन तो था मेच्योरिटी पीरियड पे खत्म हो गया ना, उसके बाद में कैसे खत्म हो कंटिन्यू गया. करेगा? हाँ, कंटिन्यू उस कैसे करेगा? यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट में जब उस पीरियड पे वो होल्ड नहीं करेगा उसको. हाँ, अगर और अमेरिकन में उससे भी पहले कर लिया. हाँ, तो अमेरिकन वो तो कॉन्ट्रैक्ट में सपोज अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट आज से 3 महीने का है और हाँ आपको फर्स्ट मंथ में लग रहा है प्राइस उसका इक्वल है अभी, तो आप हाँ जी, उसको हाँ. होल्ड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि उसका क्या सिचुएशन है, मार्केट में कम होगा या ज्यादा होगा, उस अकॉर्डिंग उसे अवेल करेंगे. नहीं, बट मेरा कहने का यूरोपियन होगा मतलब तब बियॉन्ड मेच्योरिटी पीरियड तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है ना. कोई भी नहीं है इसमें. हाँ, तो जो हम एट द मेच्योरिटी एट द मार्केट वाला जो डिस्कस कर रहे थे उसमें, इन द मार्केट, आउट ऑफ द मार्केट एंड एट द मार्केट, जो लास्ट में था आपने कहा था कि इसको होल्ड करेंगे. तो होल्ड करने का मतलब क्या है? होल्ड करने का मतलब है कि वो अभी अमेरिकन ऑप्शन की बात कर रहा है कि उसमें उस पॉइंट पे, उस डेट पे जो ये प्राइस है तो उसे होल्ड करेगा. आप फर्दर देखें इसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है या नहीं, डिक्रीज हो मेरे रहा ख्याल है. में लैप्स हो जाता है उसमें भी ना. वो एट द मनी में भी लैप्स. अमेरिकन ऑप्शन में हाँ, नहीं, अमेरिकन में तो मेच्योरिटी से पहले वो कर सकते हैं आप. हाँ, मेच्योरिटी से पहले आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं. हाँ, तो वो तो लेकिन मेच्योरिटी के बाद की बात है ना, उसमें तो एट द टाइम आप कह रहे हैं कि उसको एट द टाइम का मतलब एट एट द द एट द टाइम, एट द मनी हाँ, वाला. एट द मनी का मतलब ये हो गया कि अभी प्राइस इक्वल है. अभी हाँ. जैसे टाइम पूरा जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में सपोज एंड होगा, हमारा हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया बाय का वो दिसंबर में एंड होगा, और आज अक्टूबर, इस डेट में अगर हम 6 अक्टूबर की बात करें तो प्राइस, जिस प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों बराबर है. तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे क्या करूं, इसको लैप्स को या फिर एक्सरसाइज करूं, क्योंकि दोनों बराबर है. तो अभी मैं देखूंगी कि फर्दर क्या होगा कल को प्राइसेस का, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम है 2-3 महीने का. तो अक्टूबर ही है, तो नवंबर में मैं देखूंगी कि क्या प्राइस है इसका. तो नवंबर उस टाइम पे डिसीजन लूंगी, क्योंकि मुझे डिसीजन लेना है दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक.
तो ये इसीलिए कह रहा है इसमें कि एट द मनी में वो अभी आपका एक्शन फर्दर वो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। ये रहा पॉइंट था। बाकी इन दोनों केस में तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमें इसका डिसीजन क्या लेना है, होल्ड करना है या इसे लैप्स करना, इसे एक्सरसाइज करना है या लैप्स करना है। यहाँ पर एट द मनी में अभी वो कोई एक्शन नहीं लेगा। किसी किसी पॉइंट पे आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा होगा होल्ड करेगा वो। जब आप इसकी थ्योरी इसमें दिया होगा, थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में वहां लिखा होता है होल्ड करेगा। यहाँ पे है नो एक्शन लेगा, वो ना एक्सरसाइज करेगा ना लैप्स करेगा। तो वो फर्दर अभी तो होल्ड ही किया हुआ है इसने, एक्शन कुछ नहीं लिया इसने, ना एक्सरसाइज किया ना लैप्स किया। तो समटाइम्स इट इज रिटन एज नो एक्शन, समटाइम्स इट इज रिटन एज होल्ड। एट द मनी में वो आप फर्दर उसका प्राइस चेंज देखेंगे। क्लियर है या इसे फिर बताऊं? हेलो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि ये जो सिचुएशन है सारी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये मेच्योरिटी डेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिचुएशन प्राइस वगैरह। ये डिपेंड करेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है और ये यूरोपियन भी हो सकता है। तो अगर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर उस डेट की हम बात करें तो खत्म हो जाएगा। ये हमें दोनों ही केसेस में बता रहा है, हमें कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो अमेरिकन की भी बात करेगा। इसलिए वो सारे कॉन्सेप्ट कि मनी क्या हो गया, एट द मनी क्या होगा। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट यूरोपियन होगा तो हमें इस सिचुएशन का तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज के बाद रहेगा नहीं। अगर एंड डेट की हम बात, ये पोजीशन देखेंगे तो स्टिल कोई डाउट है तो आप इसमें बता देंगे, मैं इसको कर क्लियर। आप एक बार फिर से सोचेंगे घर पे, कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 11 अभी नहीं हुआ है, क्वेश्चन 11 हम लोग 27 को करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन 11 में आधा घंटा टाइम लग जाएगा तो टाइम किल हो जाएगा थोड़ा। क्वेश्चन 11 कराऊंगे आपको, 27 को, इसमें 24th लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, एफआरए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कैप्स एंड कॉलर, इजी टॉपिक है तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, that is option pricing model means computation of premium. ऑप्शन प्रीमियम हमने पढ़ा, दैट इज प्रीमियम अमाउंट पेएबल बाय बायर टू सेलर। बायर सेलर को क्या प्रीमियम पे करता है, दैट इज ऑप्शन प्रीमियम। So option pricing model helps us to compute the amount of premium. प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए हम कुछ मॉडल्स यूज, मेथड्स यूज करते हैं। दीज आर ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। 3 methods, basically 5 method. One is binomial method. This is totally formula based, वो याद करना होगा। और हर एक मेथड का मैंने क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर दिया है, मैं इसको हैंड रिटन दिया है, so that we can discuss this one.